Equilibrium is the condition of the system in which competing influences are balanced. I don't know, my camera is not on, so that's why I will able. Equilibrium is the condition of system in which competing influences are balanced. So let's take an example. Suppose you know seesaw, right? So this is a seesaw. Like this way, this is seesaw. Okay. तो सीसो में क्या होता है कि एक जना ऐसा जाता है एक जना ऐसा जाता है राइट. Yeah. हाँ. तो उसमें क्या हो रहा है बैलेंस नहीं है कि एक अगर ऊपर है तो दूसरा नीचे है. अगर ऐसी भी कंडीशन आ सकती है कि दूसरा ऊपर आ जाए या ये नीचे हो जाए. तो द मोमेंट जिस पे ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं, द मोमेंट दैट द बोथ बैलेंस ईच अदर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द इक्विलिब्रियम पॉइंट. ठीक है. जिस मोमेंट पे दोनों आपस में बैलेंस कर जाते हैं उसी पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट. राइट. So let's take one more example. Do you show? I know you have seen weighing machine, right? That we weight the vegetables and fruit, right? Yeah. Yeah. So sometimes this goes up, sometimes this goes up and down. The point at which this will be balanced, like this is also 10 kg, this is also 10 kg. The point at which these two will be balanced, that point is called as the equilibrium point, right? Yeah. Yeah. So this is basically equilibrium. It is what? It is the condition of the system. Is the condition of system in which competing influences are balanced. Competing influence means net force on the system is zero. That is basically known as the equilibrium. Any doubt? No. So these are, we have two types of equilibrium. First is static and other is dynamic equilibrium. Right? First is static equilibrium and other is dynamic equilibrium. Static equilibrium means if object is at rest. Let's take the example of seesaw. सीसो वाले एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि जो पर्सन उसके अंदर बैठे हुए हैं वो तो कोई मोशन नहीं कर रहे. केवल मोशन क्या हो रहा है, सीसो का मोशन हो रहा है ना. Yeah. हाँ. सो ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें ऑब्जेक्ट सिर्फ रेस्ट पे है, जैसे जो पर्सन इनके अंदर बैठे हैं वो रेस्ट पे है, बाकी सीसो मूव कर रहा है. तो और ऐसे टाइप के इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम. राइट. अब जैसे वेइंग मशीन का एग्जांपल था, क्या इसमें जो वेजिटेबल और फ्रूट है वो मोशन कर रहे थे? है. Yeah. वेजिटेबल फ्रूट इसके अंदर जो थे वो मोशन कैसे कर सकते हैं? Oh no, like the हाँ. weights. जो Huh. वेजिटेबल और जो वेट रखा हुआ था हमने वो तो मोशन नहीं कर रहा था. ओनली द वेइंग मशीन इज दैट मोशन. So the type of equilibrium with which the object is at rest is called as static equilibrium, right? Okay. And what is dynamic equilibrium? Dynamic means object is undergoing motion. जब ऑब्जेक्ट खुद मोशन कर रहा है तो वो कैसा इक्विलिब्रियम हो जाएगा? स्टैटिक डायनेमिक इक्विलिब्रियम. जैसे मैं कहूँ भाई यहाँ पे था, आई एम मूविंग 2 स्टेप फॉरवर्ड and 2 step backward. What is my position? It's like the same Same. So this type as of in. equilibrium is known as dynamic equilibrium. यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं मोशन कर रहा हूँ ना, मैं 2 स्टेप फॉरवर्ड मूव कर रहा हूँ, 2 स्टेप बैकवर्ड मूव कर रहा हूँ. तो this type of equilibrium is called as dynamic equilibrium, right? Okay. हाँ. और let's take the example of mall. Mall गए हो आप? Yeah. In mall, suppose there are 50 people. अब क्या हो रहे हैं? 10 people are going outside and 10 people are coming inside. So how many people are there in the mall? Like 50. 50 only. So this type of equilibrium is called because 50 is balanced. So it is the equilibrium. And why it is dynamic equilibrium? Because there is a motion of objects. Right? Objects. Any doubt? No. No.
First one is static, sorry, first one is physical equilibrium, and other one is chemical equilibrium. Are you writing these points? Well, I will share the notes, don't worry. Yeah, I'm writing them. Yeah, please write. Have you written? Yeah. So, what is a physical equilibrium? Physical equilibrium means when there is no chemical changes are occurring, means there is no change in chemical properties. The equilibrium in which there is no change in the chemical properties. If there is no change in chemical property, it is known as physical equilibrium, right? Example, you can say phase transformation, right? So in the phase transformation, Yeah. that solid converts into liquid, liquid convert into gas, and gas again convert into solid. This is known as phase transformation, right? And solid convert into liquid, liquid convert into gas, and gas convert into solid. This is phase transformation. In this, no change in the chemical properties are there. So this is a type of physical equilibrium, right? फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब कोई केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आ रहा, आप सॉलिड से तुम लिक्विड में जा रहे हो, जैसे आइस से वाटर में जा रहे हो, क्या कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है? नहीं. नहीं, तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है? इट इज फिजिकल इक्विलिब्रियम. यहाँ तक कोई Physical. डाउट है? केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं. में क्या हो रहा है कि कोई केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है, मतलब कोई रिएक्शन हो रही है, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहा है, तो वो क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम है. चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस, राइट? एनी डाउट? No. Please write these points, then we will move further. Yeah, I've written. Good, good. Now we will study deep into the chemical equilibrium. Are you getting any doubt from previous concept? What is equilibrium? What is static? What is dynamic? Dynamic is two types, physical and chemical. Then I'm moving with chemical equilibrium, right? Yeah, no doubts. So chemical equilibrium क्या होता है? Definition is the rate of forward reaction. Rate of forward reaction is equals to rate of backward reaction. Rate of forward reaction is equals to rate of backward reaction. This is basically known as the chemical equilibrium, right? मतलब जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन चल रही है उसी रेट से बैकवर्ड रिएक्शन चल रही है, वो होता है मेरा केमिकल इक्विलिब्रियम, राइट? Yeah. रिवर्सिबल रिएक्शन सुने हो क्या होती है? व्हाट आर रिवर्सिबल रिएक्शन? Like that can be like reversed to form like the original. Reactant can convert into product, and product can again convert into reactant, right? This is interconversion thing. Like I'm saying A plus B reverses to C, means A plus B can convert into C and C again convert into A plus B. So this is a reversible reaction. Any doubt in this? Doubt है कोई? Sorry, your voice broke. Yeah, I say any doubt? No, no. No, very much. So what's a forward reaction? Forward reaction is basically when reactant get converted to product. This is forward. When product get Then converted we into start. reactant. Yeah.
Yeah. So I'm giving one reaction N2 plus 3H2 give rise to 2NH3. Can you find me the forward and backward reactions? This is the forward reaction and the backward reaction would be 2NH3 um gives N2 plus 3H2. Very good. Very good. Till now, any doubts? No. No, very good. Now, we will see graph showing equilibrium because mostly our questions arises from a graph. Okay, in AP level R. Okay, so I hope you know what is concentration. Can you explain what is concentration? Like it's the amount of solute in a solution. The amount of solute that is present in a solution. This is basically known as the what? Concentration. Yeah. Till here, any doubt you can ask me. No. Can we move further? Can we move further? Yeah, yeah. Okay. So concentration of reactant that decreases with time. Am I correct? कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ घटती जाती है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ती रहती है सही बात है Hmm. और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट राइट Yeah. रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ कम हो रही है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ रही है और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट राइट Yeah. या नाउ माय क्वेश्चन यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ of this reaction H2 I am giving the options as well. I2 give rise to 2HI. Let's see the option very clearly. Option 1 is this is concentration versus time. This is option 1. Option 2 is this is H2, I2 and HI. Same concentration versus time. I am not writing anything. Please see the options very thoroughly. This is third and then H. So the right and right option for also. Yeah. Can you tell me the answer now? Which will be the graph showing the equilibrium between them. Three. Option? Option three. No. Oh, sorry. Okay, I mixed up the labels. What's the concentration of reactant get decreased with time and the concentration of product get increased with time? The point at which they intersect, that point is called as the equilibrium point. Um, will it be one? What? One. Option one. Correct. Any doubts? No. Now you just draw.
Draw the graph for this reaction. I have a question. So, like in the above graph that like you showed Yeah, the first one, correct option. Um, like can you scroll up? yeah. Yeah, so you place like hydrogen and iodine over like HI. So how do we know where the position of them? So position doesn't matter. You can place, but main matter is the reactant. In this reactant concentration get decreased with time, and product concentration is increased time. Position does not matter. You Okay, can place anyone above or before. मेन कॉन्सेप्ट ये है कि okay, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घटनी है टाइम के साथ प्रोडक्ट की बढ़ानी है ये है ठीक है okay. और ऊपर इसलिए भी रखते हैं टेक्स्ट बुक वगैरह में कि आप सबसे पहले रिएक्टेंट्स हमारे पास आते हो फिर उसके बाद प्रोडक्ट बनते हैं तो आप पहले प्रायोरिटी रिएक्टेंट को दे सकते हैं ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं Where should I send the graph? you have WhatsApp or you don't have Yeah. interesting. Have you shared? Yeah, I'm sending. Give me a minute. So did you receive the image of the graph? Yeah, good.
Any doubts in here? Next topic we will study with physical equilibrium. Demos of 30 and 40 minutes, right? So what is physical equilibrium? It is such type of equilibrium when there is no change in the chemical properties. Example is phase transformation. So first I am considering the solid liquid equilibrium, right? Any doubt? No. So what are solid liquid equilibrium? Let's take one example. I have same mass of ice and water. Same mass of ice and water at 0 degree Celsius. I have same mass of ice and water at 0 degree Celsius. And what is 0 degree? It is the melting point of what? Ice. And it is also a freezing point of water. Right? Yeah. So suppose I have one box. In this box, there is same mass of ice and water are kept at 0 degree Celsius, right? After 5 to 10 minutes, I don't see any observation. मतलब मुझे कोई changes नहीं दिख रहे हैं. इसका मतलब क्या है? क्या melting और freezing नहीं हुई है? No. नहीं, हुई तो है. पर इसमें Like, क्या हुआ? yeah, like इक्विलिब्रियम आ गया है उनके बीच में कि जिस रेट से मेल्ट हो रहा है, दैट रेट ऑफ मेल्टिंग इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्रीजिंग. the rate of मतलब freezing. जिस रेट से वो मेल्ट हो रहा है उसी रेट से वो फ्रीज हो रहा है. तो इसलिए मुझे ऑब्जर्वेशन नहीं मिल रहा है. असलियत में मेल्टिंग भी हो रही है, फ्रीजिंग भी हो रही है, पर जिस रेट से मेल्टिंग हो रही है उसी रेट से क्या हो रही है? फ्रीजिंग हो रही है. तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है? सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम. तो डाउट यहाँ तक? No. Next is liquid vapor equilibrium. So what is liquid vapor equilibrium? In which the rate of evaporation is equals to rate of condensation. मतलब जिस रेट से evaporate हो रहा है उसी रेट से condense हो रहा है. तो rate of evaporation is equals to rate of condensation. राइट? जिस रेट से evaporate हो रहा है उसी रेट से condense भी कर रहा है. तो that is liquid vapor equilibrium. समझ आया? Yeah. Last one is solid vapor equilibrium. So what is solid vapor equilibrium? इसके अंदर क्या होगा? आप बता सकते हैं थोड़ा सोच के कि सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम में क्या होगा? Like the rate of freezing equals to the rate of evaporating. फ्रीजिंग कहाँ से आ गई? फ्रीज तो कर ही नहीं रहे ना. सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट के प्रोसेस को क्या कहते हैं? सॉलिड टू गैस के प्रोसेस को. आंसर है कोई? Sublimation. सब्लिमेशन. सो रेट ऑफ सब्लिमेशन is equals to rate of डिपोजिशन. जिस रेट से सब्लिमेट हो रहा है उसी रेट से डिपॉजिट भी हो रहा है. समझे? जिस रेट ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिपोजिशन. राइट? Yeah, okay. लाइक आयोडीन सॉलिड एंड आयोडीन वेपर, ये क्या है? इक्विलिब्रियम में है. ठीक है? समझे? Yeah. देखिए आज के लेक्चर में कोई डाउट हो स्टार्टिंग से एक बार मैं रिवाइज भी करा देता हूँ. व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन होती है सिस्टम की जिसमें कॉम्पैटिंग इन्फ्लुएंसेस बैलेंस रहते हैं. मतलब जो नेट फोर्स रहता है वो सिस्टम पे जीरो रहता है. लाइक सी सॉ में हम मूव कर रहे हैं तो जो इस पॉइंट पे बैलेंस होंगे उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम पॉइंट. राइट? वेइंग मशीन में हमने देखा था कि जब ये बैलेंस करेंगे 10 kg दैट पॉइंट विल बी इक्विलिब्रियम पॉइंट. राइट? Yeah.
इक्विलिब्रियम दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टैटिक और डायनेमिक। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, जैसे सीसॉ में जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर रहा है, तो दैट इज अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। वेइंग मशीन में जो वेजिटेबल्स और फ्रूट रखे हैं वो मूव नहीं कर रहा है, तो जहां पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है दैट इज कॉल्ड अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन कर रहा है, जैसे मैं 2 स्टेप फॉरवर्ड मूव कर रहा हूँ, 2 स्टेप ही बैकवर्ड मूव कर रहा हूँ, तो मैं किसी स्टेट में इक्विलिब्रियम स्टेट में। डायनेमिक में दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका फिजिकल, एक होता है केमिकल। फिजिकल में मतलब कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आ रहा है, जैसे फेज ट्रांसफॉर्मेशन। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा, जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जैसे जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड, जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है उसी रेट से बैकवर्ड रिएक्शन होगी, तो वो होगा आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, राइट। Yeah. रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती है, जहां पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में। फॉरवर्ड में ए प्लस बी से बन रहा है सी, बैकवर्ड में सी से बन रहा है ए प्लस बी। ग्राफ क्या हो रहा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ घट रही है, प्रोडक्ट की टाइम के साथ बढ़ रही है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ये ग्राफ मैंने बना दिए, डाउट है ग्राफ में? फिजिकल इक्विलिब्रियम नहीं. समझा है। सॉलिड लिक्विड में क्या है, सेम मास ऑफ आइस इन वाटर ले रहे हैं, मैंने देखा 10-5 मिनट बाद चेंजेस नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब क्या, मेल्टिंग और फ्रीजिंग हुई नहीं हो रही है, पर जितने रेट से मेल्ट हो रहा है उतने से फ्रीज हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट लिक्विड वेपर एंड सॉलिड वेपर। आपको डाउट हो तो पूछिए। नहीं. any doubts? No, no. Okay, so